use a be verb in present tense and in past tense with different subjects. These are the subjects and here is the be verb, the base form. Present tense में be verb का जो form है I के साथ जो use होता है that is am. ठीक है, am. और past tense में इसका form जो है I के साथ वो है was. With we use are in present tense and we use were in past tense. With you again we use are form of the be verb in present tense and in past we use the same were. With he subjects he and at in present tense the be form is with all of them, all of these three subjects is and past form is again was with all of these three subjects. With they it's again a plural subject so the be verb for present is are and past is were. अच्छा, तो ये है वी वर्ब की मुख्तलिफ यूजेस प्रेजेंट टेंस में एंड पास्ट टेंस में. अच्छा, एक और बात याद रखिए कि ये जो बी वर्ब जो है इसके बाद आप दो टाइप्स के वर्ब यूज़ कर सकते हैं और ये कब यूज़ होगा, ये पैसिव वॉइस में. ठीक है, यानी जितने भी पैसिव वॉइसेस आप बनाते हैं सब पैसिव वॉइसेस स्ट्रक्चर में आपने बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करना है. ठीक है, और दूसरा यूज़ जो बी वर्ब का है और ये कौन से वॉइस में होगा, ये एक्टिव वॉइस में होगा. मुख्तलिफ जो कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं उनमें ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है. सो वन इज़ दिस एंड दिस वन इज़ द सेकंड वन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.